So students, our today's topic is the meaning of tachyphylaxis. Okay, this is the base concept of pharmacology, and especially the students, those who are in semester 4 in unit 1 of pharmacology, आपको ये topic है the meaning of tachyphylaxis. So let us understand what is the meaning of tachyphylaxis. Now, to define tachyphylaxis, the sudden decrease, or we can directly say loss in drug effect after prolonged use of drug is called as tachyphylaxis. Okay, इसका दूसरा मीनिंग है the synonym is desensitization. In some books it is also referred to as acute tolerance. Okay, but make sure this is not a tolerance. इसको acute tolerance बोल सकते हैं, मगर ये tolerance नहीं है. So the sudden decrease or loss in drug effect after the prolonged use of drug is called as tachyphylaxis. Now let us understand what actually is the tachyphylaxis. This was the definition. Okay, तो tachyphylaxis क्या होता है, हम एक example से समझेंगे. We will understand this with the help of an example. Now let us suppose we have one patient over here. Now this is the patient. The name of the patient is Mr. Chandu. Okay, तो ये जो Mr. Chandu है, he was diagnosed with hypertension. He was diagnosed with hypertension in, let us say, 2022. So doctor gave him prescription of tablet amlodipine. Okay, tablet amlodipine. Amlodipine is an antihypertensive drug, और जिसके वजह से टेबलेट एम्प्लोडिपिन की वजह से चंदू का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता था 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, अब ये चालू था प्रॉपर्ली चालू थी चंदू की ट्रीटमेंट. अब चंदू ने ये ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया 3 साल तक, 3 years तक चालू किया. एंड समवेयर इन 2025, लेट अस टेक वन डेट, 31st December 2025, साल की आखिरी रात थी. एंड चंदू वाज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज 31st पार्टी. इसके लिए चंदू ने मॉर्निंग में सेम टैबलेट ले लिया. ओके, टैबलेट एम्लोडिपिन. एंड व्हेन ही टुक, उसका ब्लड प्रेशर वाज एक्जेक्टली नॉर्मल 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी. बट इवनिंग में जब चंदू टैबलेट लेता है, इवनिंग में सेम टैबलेट लेता है, तो आफ्टर टेकिंग टैबलेट एम्लोडिपिन, ओके, उसके तुरंत 5 मिनट बाद चंदू को स्वेटिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है. तो चंदू उसका ब्लड प्रेशर मेजर करता है एंड द ब्लड प्रेशर हैज राइजन अप टू 150/100 mm ऑफ मर्क्यूरी. टू द शॉकिंग, क्या हो गया चंदू को? चंदू ने टाइम पे तो टैबलेट लिया एम्लोडिपिन, जो सुबह लिया, जो पिछले 3 साल से ले रहा था, और ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में था. ओके, नाउ सी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टैबलेट है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग. 3 साल से ये दवाई ले रहा था. ओके, मॉर्निंग के डोज तक भी सब कुछ सही था, लेकिन इवनिंग का जब डोज लिया तो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगा टॉलरेट होने को, 5 मिनट के अंदर अंदर मेडिसिन ने अपना इफेक्ट शो करना स्टॉप कर दिया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस. ओके, नाउ हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टॉलरेंस? ये टॉलरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये टॉलरेंस होता तो ये चीज 5 मिनट में नहीं होती थी. इसको होने के लिए उसको शायद 5 दिन लगते थे, 5 हफ्ते लगते थे, या 5 महीने लगते थे. एक ही बारी में 120/180 जो नॉर्मल कंट्रोल था, उससे डायरेक्ट 150 तक नहीं जाता था. 120 से 130 होता था, 140 होता था, और फिर 150 इंक्रीज होता था. ऑल ऑफ सडन ऐसा होता नहीं था. लेकिन जब ऑल ऑफ सडन ऐसा होता है, उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं tachyphylaxis. Okay, so this is the concept of tachyphylaxis. Now let us understand at the pharmacological level, why does this take place? Okay, ऐसा होता क्यों है? चंदू के केस में tachyphylaxis क्यों हुआ, या किसी और पेशेंट के केस में ऐसा tachyphylaxis क्यों होता है, that we are going to understand now. Okay, now this is the phenomena which takes place at the cellular level, at the receptor level. Okay, now let us understand. See, this is the cell, and on the cell we know that there are some macromolecules, and these macromolecules we name it as receptors. We name it as receptors. You might be knowing various receptors, जिसे हम लोग कहते हैं GPCR, G protein coupled receptors, बाद में ligand gated ion channels, ligand gated receptors और ion channel receptors होते हैं, etc etc. There are different types of receptors. Okay, now what happens is, let us say for example, अगर GPCR type of receptor है, तो as soon as the drug molecule binds to the receptor should start with the secondary information system या secondary messenger system.
तभी क्या होगा, ये सेल अपना एक्शन शो कर पाएगा, यानी कि ड्रग की एक्टिविटी शो होगी। या फिर अगर ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल है तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे ड्रग ने बाइंड किया, आयंस का फ्लो जो है आर पास होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज इन टैकीफाइलैक्सिस, ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर, but the receptor has already undergone conformational changes. Or another language we can say it has undergone the process of phosphorylation. ओके, एक फॉस्फोरस ऐड हो गया है, या फिर रिसेप्टर का वो साइट जहां पे ड्रग उससे बाइंड हुआ है उसको छोड़ के जो दूसरा साइट है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए. देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द रिसेप्टर अपार्ट फ्रॉम द साइट वेयर द ड्रग इज बाइंडिंग. Because of that, even after the drug binds it, the receptor is not going to show the action. Okay, now because of such thing, what is going to happen? The drug fails to execute its efficacy. Drug fails to show effect, and this is all of sudden. And when it is all of sudden, that will be called as tachyphylaxis. Okay, so this is the concept of tachyphylaxis. In exam, it may encounter for 2 marks, 3 marks, or 5 marks. Okay, so you need to write down for 2 marks only definition. For 3 marks, 5 marks, you need to explain this with the help of an example. So I hope you have understood what is the meaning of tachyphylaxis. If you have understood the meaning of tachyphylaxis, I will request you to like the video, to share the video among your friends, and also subscribe the channel. चलो, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम अनदर टॉपिक.